Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. I practice as a senior neurologist here at Davangere. I work at SS Narayana Health Center, and my area of expertise is epilepsy, stroke, and peripheral neuropathy. I think we can start the session right away. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? Okay, see, it's very simple. Uh, Brain is an organized network of neuronal cells. We call it as nerves. In simple words, you can say these are connections of electrical wires. Okay, so that's how our brain functions. So, for a normal individual, whenever there is communication between these neurons, what we call just like electrical wires, I speak, I do some activities. I think this is all how a brain functions. So what happens in seizure is there will be lot of electrical activity going on in one part of the brain or in many areas of the brain, depending on the nature of the seizures. And suddenly, because of this high electrical activity of the brain, patient will lose his कॉन्शियसनेस मतलब उसको होश उड़ जाता है उसका he'll start he'll fall on the ground and then start having these motor activities. So it's basically seizures is nothing but it's a abnormal generation of high electrical activity in the brain because of which patient loses his consciousness. This is simple seizures. What is epilepsy? देखो एपिलेप्सी में क्या होता है seizures means patient may have this whatever episodes हम लोग कहते हैं मतलब patient will have one time two times the seizures and he'll be having recurrent fits attack. Epilepsy में क्या होता है what happens in epilepsy patient will have repeated tendency to fall on the ground. मतलब this is a larger disorder wherein patients will have that abnormal brain which will start producing more number of electrical discharges more frequently. So isko मतलब many times he'll start having seizures. So that is what called as epilepsy. So epilepsy is a group of syndromes which will have a patient who will be having many times of seizures. So that is called as epilepsy. What are the different types of seizures and do they affect people differently? Yes, देखो seizures affects all classes of people. It can affect from day one मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से स्टार्ट होके it can affect बुजुर्ग लोग सीनियर सिटीजन्स को भी अफेक्ट हो सकता है more than 80. So this has got no age restrictions. Number one. Second, seizures can have many presentations. मोस्ट कॉमन टाइप विच वी कम अक्रॉस एंड पब्लिक में ज्यादा नॉलेजेबल है उसको हम लोग ग्रैंड माल सीजर्स बोलते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स दिस इज व्हाट वी यूजुअली कॉल मेडिकली what happens patient will be on the ground he'll be violently shaking his upper and heart or both lower both legs and hands he'll be shaking with face turned to one side and then he'll be vigorously shivering. So that is called as major fits attack grand mal epilepsy or generalized tonic-clonic seizures. This is by and large most common type of seizures which we see. Minor seizures में क्या होता है patients will have one part of the body shaking. He may have one part of the neck, so he'll be having only neck moving towards one side. That is one part of the seizures. Many some patients may have only hands shaking. One part of the hand will be shaking like this, but his uh, consciousness will be okay with him. मतलब इसका बेहोश नहीं होता है. Patient will be telling that only one side of the hand is moving like that, or he may also have one side of the leg moving. So these are all minor fits attack. Minor मतलब these are not minor medically, but thing is patient will be conscious. Patient को होश रहता है बताने के लिए.
इसको हम लोग माइनर फिट्स अटैक बोलते हैं. दिस इज नंबर 2. तीसरा टाइप आता है जहाँ पे बच्चों में होता है, हम लोग उसको व्हाट वी कॉल, मेडिकली वी कॉल इट एज एब्सेंस अटैक्स. सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं इसको स्टैचू अटैक्स बोलते हैं. मेनी ऑफ माय पेशेंट्स कम टेलिंग दैट स्टैचू. छोटे बच्चे में होता है यूजुअली 4 साल से 10 साल तक, 4 to 10 years old kids will have these absence spells. Absence में what exactly happens? A kid usually he just stares at one single point and then just like statue like that for 5 seconds or 10 seconds. Usually, teachers will tell that your kid is not attentive to my classes and all, and parents suddenly the kid will be playing some activity or music class, suddenly he starts staring like this for 10 seconds or 15 seconds. These are all statue attacks. इसको हम लोग absence epilepsy बोलते हैं. So this is considered as one seizure type only. So by and large, these are three major types. There are other minor types also. We call it as myoclonic epilepsy बोलते हैं. We can call it as झटके बोल सकते हैं. Usually, adults and school-going kids में they'll have this violent shaking spells like this, like this. Patient will be just homework करते रहते हैं, suddenly झटके आने start होते हैं. So these are myoclonic seizures बोलते हैं. This is fourth type. Very minor number of people will have sudden drop attack. They'll be just moving around and then just suddenly drop like this. So these are atonic spells बोलते हैं. So this is another type of minor seizures. So common medical parlance में, in common medical parlance, we have these 5 types of seizures, amongst which most of the seizures जो होते हैं इसमें जो बड़ी मार ग्रैंड माल बोलते हैं वो वाला होता है. So this is it. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? Yes, absolutely. We have to find out a cause for epilepsy because epilepsy, as I told, there are many varieties. एक बड़ा सिंड्रोम होता है. सिंड्रोम मतलब एक बहुत बड़ा बास्केट जिसमें काफी सीजर वेरिएशंस होता है. इसमें अनेक अनेक कारण भी होते हैं. डिफरेंट रीजंस फॉर विच पेशेंट विल बी हैविंग दिस सीजर्स. मोस्ट कॉमनली देयर विल बी प्रॉब्लम इन द ब्रेन. जब इन्वेस्टिगेट करते जाते हैं तब इसका हमको क्या है इसके बारे में क्लूज मिलते हैं कि क्यों पर्टिकुलर मरीज की जो ब्रेन में एपिलेप्सी अटैक हो रहा है, इसका क्लूज हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं. कॉमन कॉजेस यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को हो सकता है या दादा दादी चाचा चाची अंकल्स विल हैव दिस सीजर्स डिसऑर्डर्स. Children might have acquired this disorder from their family. So this we call it as genetic problem, number one. Second, usually young kids and school going adults, they'll have brain infection. Whenever the brain catches infection, not always, many a times, so this infection can precipitate सीजर्स आने की वो जो क्या है माहौल है वो क्रिएट कर सकता है. सो सेकेंड कॉजेस विल बी अ ब्रेन इन्फेक्शन विच कैन कॉज. थर्ड विल बी ब्रेन ट्यूमर्स. बहुत ही रेयर है लेकिन वी कम अक्रॉस मेनी टाइम्स मिडिल एज एंड एल्डरली या इनफैक्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी जब भी ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं, मतलब ब्रेन ट्यूमर्स बोलते हैं, ब्रेन में एबनॉर्मल सा जब सॉल्स प्रोलिफरेट होके जब ट्यूमर बन जाता है, सो देन दैट ऑल्सो प्रोवोकेट्स दैट ब्रेन फॉर पर्टिकुलर सीजर्स. ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं. देन स्ट्रोक मैंने बताया था कि कभी कभी स्ट्रोक होने के बाद जब भी वो स्ट्रोक रेसिड्यू बच जाता है उसका मतलब हील हो जाता है ब्रेन में, सो दैट रेसिड्यू दैट स्कार कैन प्रेसिपिटेट सीजर्स इन मोस्टली पीपल हु हैव दिस व्हाट यू कॉल. इसके बाद क्या है, स्ट्रोक के बाद कभी कभी मरीजों को फिट्स आने के चांसेस हैं. ये प्रॉपर ब्रेन डिसऑर्डर से जहां हम लोग सीजर्स देखने को मिलता है, इसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं. इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज इवन पीपल हुज ब्रेन्स आर नॉर्मल बट इसमें जो है इंसल्ट मिल जाता है. देखो यू माइट हैव कम अक्रॉस लाइक people who are chronic alcoholics who might be consuming alcohol more than whatever scientific या रेंज से बाहर दारू ज्यादा पी रहे हैं, एकदम से छोड़ देते हैं या दारू ज्यादा हो गए, तब भी क्या है ब्रेन बहुत नाजुक होता है, उस टाइम पे इसको सीजर्स आने के चांसेस है. दिस इज वन. सम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कॉमनली जहाँ पे मरीज काफी ज्यादा क्या है गोलियों पे रहते हैं जिनमें सोडियम की कमी होने से हम लोग नजर आते हैं, इसमें हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं. तो सोडियम कमी होने से भी सो ब्रेन की जो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है उसको कंट्रोल करने की क्षमता जो है वो
लूजर्स है, मतलब वो खो देता है, तब सीजर्स आने के चांसेस। सो देयर ऑल सिस्टमिक कॉजेस। कभी हाई फीवर हुआ है बच्चे में, बहुत कॉमन है, इनफैक्ट लेस देन 6 years ओल्ड वी कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड एज फिब्राइल सीजर्स। फिब्राइल सीजर में क्या होता है, बच्चे की जो दिमाग होती है, 6 साल के बच्चे को जो दिमाग में, कुछ लोगों में काफी ब्रेन नाजुक होता है। नाजुक किस लिए होता है, वो अब्रप्ट फीवर ज्यादा हो जाता है ना, तो हैंडल नहीं कर पाता है। So whenever this fever can cause seizures in the small kids, we call it as febrile seizures. तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन में ही प्रॉब्लम हो, कहीं कभार ब्रेन से बाहर भी कहीं भी प्रॉब्लम है, तो whenever that patient's brain is not able to handle that exterior stress, then also it can precipitate seizures. So these common situations. Thing is, all seizures and epilepsy syndromes have to be investigated. ऐसा नहीं है कि किसी मरीज को देख लिया, कोई मरीज कोई डॉक्टर के पास चले गए, हाँ भाई तुम्हें फिट्स अटैक है, यू गॉट व्हाटएवर epilepsy seizures, you have to take medicines, and then the things doesn't end there. All patients have to be investigated for what is having seizures or epilepsy. We commonly get electroencephalography, MRI, CT scan वगैरह करा के हम लोग एक क्या है, we just reach at a conclusion as to why that particular brain is having this fits attack or seizures. Then we take decision accordingly. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? Yeah, extremely important. Caregivers have a lot of things to do apart from doctors. See, thing is, one many times what happens, there are misconceptions about epilepsy and seizures. कि whenever patient has these जो convulsive movements बोलते हैं ना, इसके होने के बाद I've seen many times people putting those pieces of cloth, and they give this what you call this चाबी वगैरह देते हैं हाथ में, presuming that fits will come down. I've seen. Third, people will try to feed them with water bottle, water, pani pilo, drink, pour some water in his mouth. Number three. So these are common things which I have come across in my whatever practice. ये सब misconception है. See, it's all very miraculous arrangements by God. परमात्मा का अच्छा arrangement है, कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। समझना क्या है कि जब तक उस मरीज में, उस पेशेंट में ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है, ज्यादा होती है, तब तक इसको फिट्स रहता रहता है। ऑटोमेटिकली व्हेन दैट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विल सेटल डाउन, विल कम डाउन, द सीजर्स विल कम डाउन। मतलब पेशेंट को होश आएगा, लेकिन लंबे टाइम के बाद आएगा। तो एक चीज होता है कि रिलेटिव्स में कुछ नहीं करना होता है। व्हेनेवर पेशेंट इज हैविंग अक्यूट अटैक, सपोज आपने किसी मरीज को फिट्स आते हुए देखा, कुछ नहीं करना है, उसको जाके एक साइड सुलाना है, उसको वन साइड। क्या उसको तो होश नहीं रहता है, लेकिन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ खाना वाना खाया होगा या 10 मिनट पहले पानी पिया होगा, इफ नॉट टेकन केयर he'll puke it and he'll directly, वो उसके फेफड़े में चले जाता है, it directly enter into lungs. So that is the most important thing. Whenever you come across a patient who is actively seizing, उसको एक साइड लिटा के बस वेट करना है एक्टिविटी खत्म होने के लिए, नंबर वन। इसके बाद दे हैव टू बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू अ नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटी, जहाँ पे स्पेशलिस्ट हो, नॉट ओनली न्यूरोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर हु इज वेल नोन विद द मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स, विल बी सीइंग एंड इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना है उसका। Number two. Third, most of the seizures and epilepsy have to be seen by a specialist who is trained in seeing these particular neurological disorders. Many times we neurologists see, but even neurosurgeons have these experiences of dealing any patients with seizure disorder. तो हर मरीज को जिसको फिट्स या सीजर्स या एपिलेप्सी है, उसका जांच कराना ही पड़ेगा। कोई न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट या इवन न्यूरोसर्जन कैन सी, एंड ऑल ऑफ देम हैव टू बी इन्वेस्टिगेट। सो इन्वेस्टिगेशन हर मरीज का कराना है, नंबर थ्री। नंबर फोर, अब आपके स्पेशलिस्ट जो है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, मरीज को जांच करके बता सकता है कि हाँ भाई इसका इलाज चाहिए, यू माइट हैव टू बी ऑन वेरी लॉन्ग टर्म मेडिसिन, इसके गोली खाना पड़ेगा, अच्छा नींद करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते, यू हैव टू स्ट्रिक्टली अडियर टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट। नंबर फोर, फॉलो बहुत जरूरी है। सो वी माइट हैव टू कॉल once in a month, once in 2 months, once in 3 months, depending on the nature of epilepsy and seizure. We'll be calling, based on certain medical necessities. So it's very important for caregivers to follow the follow-up instructions as provided by specialist. So ये चीज ध्यान रखना है।
Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? देखो क्या है, हर चीज की सोर्स ही अज्ञान है. ठीक है, सो ऑल द सोर्स ऑफ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग इज ignorance. Okay, so probably 20-30 years back, yeah, probably 5 decades before, when we had no medical treatment and modalities to investigate why these things happen, डॉक्टर के पास भी we had no answers as to why this is happening. So probably what I have seen, people have this tendency of carrying over whatever was practiced 2 decades, 30, 20 years back, whatever was there. So that is still being communicated into the community as to what have to be done whenever is there. So basic thing what we have to do is we have to educate our people and tell them that this is not a, ये बीमारी नहीं है. So there are two things. Again, I always tell this. One is disease. One is it's not a disease. It's just a small illness. What we call illness मतलब बहुत छोटा होता है. So first thing is we have to educate our people to tell that this is not a big disease. छोटा बीमारी है जहाँ से छोटे छोटे बारीक चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं. I think we can start with our own family and friends and educating all doctor community. Second, we can educate our paramedic जहाँ पे point of contact usually general practitioners होते हैं. So it's our duty to educate them and convince them to tell the public that this is not a big problem, it's a small problem. Please come at a right time to a medical center and get investigated and इसका treatment. So I think educating and taking out ignorance is a big part in taking out misunderstandings. That's what I feel. That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? Yes, very good. Yeah, see, lifestyle, one thing, most important thing is regular medicines. जो आपके स्पेशलिस्ट ने बताया होगा वो medicines you have to take it very regularly. Number one. Second is we know that any disturbance in the sleep will cause a fit attack. मतलब whenever there is a disturbance in the sleep, so that will provoke the already compromised brain जो फिट्स अटैक करने की जो उसको वो एक टेंडेंसी होती है उसको बढ़ाता है. So second is sleep. Sleep, no, what sleep? Sleep, we call at least 7 to 8 hours per day is a what you call medically required sleep for any individual. Of course, बच्चे में थोड़ा ज्यादा sleep होने की tendency होती है, and whenever patient gets aged, then his sleep requirement may come down. But कॉमन टर्म्स में फॉर एपिलेप्टिक इंडिविजुअल जो एपिलेप्सी की बीमारी होने वाले मरीज रहते हैं उनको एटलीस्ट 7 to 8 hours स्लीप बहुत जरूरी है, अनइंटरप्टेड स्लीप. I've been coming across patients who do these night drives and all. They ask me like, नहीं सर 4 घंटा ड्राइविंग है वो काफी है, मैं आके कॉम्पेंसेट कर लेता. नो, वी टेल इट्स अ गुड क्वालिटी 8 hours uninterrupted sleep. See, if patient has to do night duties and all, मतलब जहाँ पे उसकी ऐसा माहौल है उसको नाइट ड्यूटी करना पड़ता है. सो आई इंसिस्ट देम यू कम बैक द नेक्स्ट डे एंड देन कंपेंसेट फॉर दैट नाइट स्लीप एट अ स्ट्रेच 8 hours. So second is sleep. Third is लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. क्या लाइफस्टाइल में क्या होता है, एक तो स्ट्रेस है. स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट वी नो, अ स्ट्रेस्ड आउट ब्रेन इज मोर सेंसिटिव टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ फिट्स अटैक. तो वी ऑलवेज आस्क हिम टू रिड्यूस स्ट्रेस. स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला है, स्ट्रेस थोड़ा कम करो, स्ट्रेस होगा तो ज्यादा फिट्स आने के चांसेस है. Regular physical exercises, he can go for regular meditation, yoga is very best. I insist my patients for go doing for regular yoga, that is very best. And the same thing, किड्स पढ़ते रहते हैं या हो सकता है हस्बैंड को या वाइफ को है, स्ट्रेस फ्री माहौल भी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है. इट्स एज पब्लिक कम्युनिटी एंड डॉक्टर्स अलोंग विद दैट फैमिली पीपल शुड अंडरस्टैंड एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. ऐसा नहीं कि तुम्हें फिट से ऐसा है, यू शुड नॉट ब्लेम इट लाइक दैट. सो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इवन दैट मैटर्स. So in the body, in the environment. So that is number 3, stress-free environment. Fourth is there are some uh, molecules which will increase the tendency of the brain to cause more number of fits attack. Usually alcohol. Alcohol is strict prohibited in patients who are epileptic. We always insist them not to take alcohol at all. So I think these are there, and there are few medicines also which will, of course, increase the tendency of particular epileptic patients for having more number of attacks.
that I think will be taken care by the primary general practitioner who will be a family consultant for that particular patient. कुछ मेडिसिन से जो अटैक इंक्रीज करने के चांसेस होते हैं वो आपके जीपी बता देंगे, ये भाई ये गोली नहीं ले, ये गोली नहीं ले, क्योंकि इसको फिट से अटैक आने के चांसेस है, सो दैट थिंग विल बी टेकन, सो दीज 5 things should be more than enough to take care of your seizures. Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? Yes, yes. I already have briefed upon this. One is whenever you happen to see any patient who is having an active fits attack, violently shaking upper and हाथ पैर हिलते रहते हैं इसके upper limb and lower limb, we ask them to put them on lateral position, whichever is there. That's the foremost thing. You just have to ask them to roll them on one side. Number one. Second is you have to clear the environment around him. Suppose you'll have a patient, having this fits attack in his office. You will have many what you call instruments and objects around him. ऑफिस में काम करता रहता, हो सकता है वो चेयर पे हो, या बार्बर वगैरह रहते हैं, सीजर्स पे रहता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट सराउंड, बिकॉज ही विल नॉट be aware of what's going on with him. So you need to keep his surrounding very safe whenever it is there. So tables वगैरह हैं, you have to take the care of them. You have to हटाना है उसको साइड से. हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, those things have to be taken out from him. एयरवेज क्लियर रखना है, पानी वानी नहीं पिलाना है. शुड नॉट give a single drop of water whenever patient is having a fits attack. Should always make sure just observe him and create a very spacious space around him. लोगों को भरना नहीं है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है. कुछ लोग हाथ पकड़ते रहते हैं, पैर कुछ नहीं करना है, बस एक हाफ अ मीटर गैप में पूरे सराउंडिंग करके छोड़ना है उसको, कुछ नहीं करना. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. Apart from that, I think yeah, if you have a nearest medical center, you can better take him once attack wanes away. You can take him to a nearest medical facility. That's one more thing. Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Yeah, great. Yeah, see, I mean, yeah, this is all about educating and removing the ignorance amongst people. So most importantly, whenever you have time, now you have listened, so it's your job to convey your family members as to what has to be done. Whenever anyone can have fits attack any number of times, so that it starts from your family and my family. So please go to your family and then tell your colleagues, and because most of the times WhatsApp groups में कितने अच्छे अच्छे groups है, most of the times we'll be utilizing this for मेनी गॉसिप्स विच आर ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, लेकिन जो जरूरत है उसके बारे में हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. सो कोई छोटे छोटे फैमिली में गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो, स्मॉल गेट टुगेदर, प्लीज मेक एन अटेम्प्ट टू एजुकेट दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू देम दैट विल कैरी. They'll remember a name, in fact, yes, Jyoti had told me this thing and also that is there, this thing. And yeah, this Alchem has done a beautiful job of putting all their efforts in bringing out this podcast and you know uh, putting this on a public list so that public will be benefited. So such podcast will definitely help. I'm grateful to Alchem people for having supported this podcast. Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.